Hello everyone. Many UPSC aspirants ask me this question. There are a lot of data, facts, and all to remember in current affairs, in history, in subjects like international relations. Then how to, and it becomes humanly impossible to remember each and everything. So, how to ace all this in UPSC and how to clear this examination? Friends, I will cover this topic. This is a very important topic for most of UPSC aspirants. आप लोग अच्छे से सुनिएगा. And if you have any other doubt, if you want any other topic to be covered, then please write in the comment section. So first thing, friends, there are many. You will come across thousands of schemes, thousands of committees, thousands of books and all. It is not easy for someone to mug up all those things. ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग सब कुछ याद करें एंड वो जो प्रीलिम्स एग्जाम में कोई पूछ लिया होगा एंड यू आर एबल टू आंसर. It is very difficult. So what is the catch there? Friends, always remember the logic behind the events, because UPSC, if you analyze the UPSC previous year question paper, they always ask about the logics. Unfortunately, the coaching center test series, they ask about the data. It is not there. So please always remember the logic. I'll elaborate this one. Like in modern Indian history, friends, I had history optional. So in modern Indian history, remember about the national movements. There were three popular national movements, mass movements: non-cooperation movements, then civil disobedience movement, and Quit India movement. Before that, there was Sepoy Mutiny, or first Indian War of Independence in 1857, and there was Swadeshi Andolan in 1905. So, friends, what is the major objectives of each of these movements? Do you remember all these events? Do you remember each and every objective of each of the? Suppose if in UPSC, if they ask about what is the major objective in Swadeshi movement, what is the major objective in non-cooperation movement? Remember, there is a catch. Like when Swadeshi movement was there, that time we never asked about the independence, complete independence. We never asked. हम लोग नहीं पूछे थे तब तक. Even non-cooperation movement में भी our goal was not about complete independence. Complete independence came when Nehru ji in Lahore Congress session, he talked about Purna Swaraj or complete independence. After that, in CDM, civil disobedience movement, and in Quit India movement, the objective was complete freedom. Before that, we are asking about some kind of Swaraj, some kind of dominion status. So in here only UPSC will play a game. Like in Swadeshi movement, we asked for complete independence. It was not. The major objective was that time Swadeshi movement. Why it happened? The reason was Bengal partition. So they asked for annulment of Bengal partition. And when it got annulment, when the partition because when the partition was rejected, it was rejected in 1911 when the British Emperor came to India. That time only it happened. So you have to remember all these things, what happened in the logic behind all these events. Like in 1905, Swadeshi movement happened. Then in 1907, because there was two factions, moderates and extremists, and their objectives were very different. So in 1907, Surat split happened, Surat Congress, and after that in 1911, the Bengal partition was rejected, and later on again in 1946, 1946 again they talked about the Bengal partition. So you have to remember all these things. Like in farmer movement is started as soon as the Britishers they captured Bengal. The farmer movement started, but by that time, like about Sannyasi revolt and all, it was in late 1780s or something. Then after that, in 19th century, in 1860s, there was Indigo Revolution in Bengal. In Indigo Revolution only the middle class participated. So before that there was no middle class participation, and when the middle class participated, that time they published in the newspaper and they wrote book about that. About Neel Darpan. It is written by Dinbandhu Maitra. It is a very famous book. So this happened, and when the middle class participated, or the later on the political parties participated, they formed association and all India Kisan Morcha, All India Kisan Congress, they formed in the 20th century. Later on, just before the independence, the communist movement or the socialist movement, they
द सोशलिस्ट दे लेड द पीजेंट मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट उन्हीं के द्वारा ही नेतृत्व लिया गया था। तो आप जितने जितने भी सुनेंगे जैसे कि पबना मूवमेंट और तेभागा मूवमेंट और द तेलंगाना फार्मर्स मूवमेंट इन द लेट 1940s, इट वाज लेड बाय द कम्युनिस्ट। सो इसी तरह से धीरे धीरे दैट टाइम दे फॉर्म द एसोसिएशन, दे हैड प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, इट वाज मच मोर फॉर्मल। सो ऐसे ही आपको याद रखना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर द लॉजिक, क्या हुआ था, इवेंट्स कैसे हुए थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे बार पूछा जाता है कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियसली भी देखेंगे G20 के बारे में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 2 साल पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस दे बिकम क्वेश्चंस। So most people they do not many people they haven't read about the G20. It's a very important group और कैसे लोग मिस कर जाते हैं ऐसे। एंड जब भी आप कोई भी ग्रुप पढ़ते हो G20 और G70 और SCO, प्लीज़ चेक, आप सारे मेंबर्स याद नहीं कर सकते। G20 में आपको 20 मेंबर्स याद करने पड़ेंगे, 20 में से एक EU को छोड़ के 19 कंट्रीज हैं उसमें। तो आपको सारे, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कंट्री। क्या पता वो आए भी नहीं। पहले हमारे टाइम में देयर वाज ए थिंग, जैसे कि एंडेंजर्ड स्पेसीज कितने हैं, कौन कौन सी हैं, रेयर स्पेसीज कौन कौन सी हैं, एंडेमिक स्पीशीज कौन कौन सी है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज होते थे एनवायरमेंट में। एंड मोस्ट पीपल दे यूज टू मग अप एंड दे आर वे नो क्वेश्चंस ऑन दोज। सो ये सारे का कोई मतलब भी नहीं होता। व्हेन एवर यू रीड अबाउट एनी एसोसिएशन और रीजनल ग्रुपिंग्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑलवेज 3-4 चीज़ें देखिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि पाकिस्तान, वेदर पाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ इट, और चाइना इज ए पार्ट ऑफ इट, और यूएसए इज ए पार्ट ऑफ इट, और रशिया इज ए पार्ट ऑफ इट। बस यहाँ को आपको चेक करना है, ये सारे अगर पार्ट ऑफ इट हैं या नहीं, तभी बस आप वो देख लीजिए। जैसे कि एससीओ, इन एससीओ यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट, Russia is not part of it. It is mostly previously in SCO. Russia is a part of it. Pakistan and India both were added in the UFA summit. So remember about the UFA summit. It is very important from that perspective. अब जब भी another thing about the schemes, there may be thousands of schemes, and in UPSC in prelims examination, in some years they will ask about 2-3 schemes and all. तो हमेशा हमेशा बहुत सारे वहाँ पे यू डोंट हैव टू मक अप ईच एंड एवरी स्कीम, बट रिमेंबर वन थिंग दैट वेदर इट फुलफिल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। स्कीम्स का भी वैसे ही ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज़ डायरेक्ट मीन्ट फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, इट इज़ मीन्ट फॉर देयर पर्टिकुलर वेलफेयर। अगर वो सारे ऑब्जेक्टिव आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगा के अगर वो ऑब्जेक्टिव फिल कर जाता है, then it is useful. This is how you don't need to mug up each and every scheme, but remember the logic behind each and every scheme. This is how you can simplify. This is how you can simplify and you can make much more score in prelims examination. If you have any other doubts, friends, you can write me in the comment section. I'll try to resolve it. Thank you, everyone.